ओके, अस्सलाम वालेकुम। सो लिंग्विस्टिक में हमने टीजी ग्रामर वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। कॉमनली इसको टीजी ग्रामर कहा जाता है। ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमने टीजी ग्रामर में। हमने पहले जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया था मैंने, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल को पूरा डिस्कस किया था, फिर जनरेटिव को पूरा डिस्कस किया था। और मैंने कहा था कि अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो और डीप स्ट्रक्चर वगैरह वो सारा कुछ अभी करना है। सो आज का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। सेकंड पार्ट जो है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ टीजी ग्रामर। टीजी हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. It will only generate the well-formed or grammatically corrected sentences of a language. It will not generate a sentence which is ill-formed or incorrect. This grammar will have recursive rules. This property of recursiveness is the capacity of rules to be applied again and again in order to generate an infinite set of values. Let's see the sentence. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, दिस इज़ अ बॉय, नाउ इट कैन बी मेड लार्जर बाय एडिंग। दिस इज़ अ बॉय हु रोड द हॉर्स। ये ये पहले इतना भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन इसको आगे हम जनरेट कर सकते हैं, आगे इस जो है वो बढ़ा सकते हैं बाय एडिंग हु रोड द हॉर्स। बट द रूल कैन बी अप्लाइड टू हॉर्स एंड वी कैन ऐड दैट चेस्ड the fox. नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी है, टीजी विल हैव a finite number of rules but will be capable of generating an infinite number of well formed sentences. फोर्थ है, the grammar will have to capture the fact that a sentence can have another sentence inside it, or phrase can have another phrase of the same type inside it. This grammar should also be capable of revealing the basic of two phenomena. First, how some superficially distinct sentences are closely related, and second, how some superficially similar sentences are in fact distinct. Next है deep and surface structure. According to Chomsky, sentences may be presented in the mind at two levels: simple, basic, or kernel sentences consisting to ideas or rough meaning must be present at deep level. The way these sentences are formed at that level is known as deep structure. We cannot see sentences in the mind, we can only hear by spoken or written. And the surface level, the structure of these sentences is known as surface structure. ये डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर की जो है वो डेफिनेशन यहीं से याद कर लें, हो सकता है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में ये आ जाए। डीप स्ट्रक्चर इज़ एन abstract concept, a theoretical concept that cannot actually be seen or touched or felt. In deep structure, we assume in the mind which changed into more complex sentences. They are very basic and can be called kernel sentences. At that level, the kernel sentences are then operated upon by certain rules so as to produce surface sentences. अब ये छोटा सा एक टेबल है, डीप स्ट्रक्चर, उसके बाद कर्नल स्ट्रक्चर आएगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशनल रूल, सरफेस स्ट्रक्चर और सरफेस सेंटेंसेस। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है डिफरेंस बिटवीन पीएस एंड टीजी रूल। फ्रेज स्ट्रक्चर पीएस को कहेंगे। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल डू नॉट अप्लाई रिक्वायर एनी डेरिवेशनल हिस्ट्री, दे आर समवट इंडिपेंडेंट. टीजी रूल्स रिक्वायर डेरिवेशनल हिस्ट्री, दे आर अप्लाइड टू द आउटपुट ऑफ द फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स and are dependent or supplementary. PS rules apply to single expected mode one at a time, generate deep structure. TS rules apply to the whole string
to produce intermediate and surface structure. PS rules cannot delete or adjust. TS rules can delete and adjust. All PS rules are obligatory. Some TS rules are obligatory and optional. TG rules are more powerful than PS rules as they account for more facts or account for them more correctly. PS rules use arrow symbol. TG rules use double arrow symbol. According to Chomsky, TG rules are simple whereas PS rules would look very complex. TG rules are more adequate and precise and more insightful and more elegant than PS. PS rules only expand one syllable into another. TG rule transfer one structure into another. Last है, TG rules reflect the intuition of the native speaker and are semantically more revealing than PS rules. ओके, अब TG ग्रामर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है. अगर क्वेश्चन हाली डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर में डिफरेंस भी आ जाए तो वो भी कवर हो गया इसमें, और प्रॉपर्टीज़ भी कवर हो गई, और PS एंड TG में डिफरेंस भी कंप्लीट हो गया. TG ग्रामर का क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुका है. कल इंशाल्लाह नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. अल्लाह हाफिज़.